sensitivity कम हुआ है क्लियर कर दे सर तुझे खाई कैसे Good morning everyone. So today is the Saturday. Everybody is in slumber, है ना? Saturday morning. उठे पे बहुत कष्ट लगे, right? आज बहुत कोविड भी अच्छी. Yes, कटक आसला बेले मुझे किसी देखा जाता है. Literally मुझे 3 थर I stopped while coming and एटा 3 थर पछी थी आज. And कोविड थी लाइक एमती जितने ड्यू पॉइंट ताको अर्थ रे मिल जाए सेठी fog बने दिया. Fog nothing but it's a cloud in the earth surface. कोई पर at the earth surface भी कोई पर भी, right? So today there was dew point. जब saturation level टा earth रे ही है जाती. जोड़ा. Hello. Yeah. Okay. So already we have started out. I mean, we have launched a new one. We have launched a new batch, Adhikari batch, which is there for the prelims foundation prelims. So we as a team trying to help you out, trying to cheer you out for your next performance. जहाँ भी तुम performance करो prelims है. So we are setting up a foundation. जेमती prelims रे गला वालों जेमती लागी बन जाए कि हाँ तुम्हें I mean you are messed up, right? Okay. तापरे this Adhikari batch is going on. आगुड़े करला. Yeah. So anyway, so Biswas batch pre plus mains you can take it 12,000 per 12,000 batch, and this Adhikari batch 9,000 7,000. Go for that batch. So prelims plus mains ro karnama set पाई जिबे. You can write everything, है ना? आउटे कथा है use this code for maximum discount SRG. Don't pay this price 12,000. Don't pay this price. Use SRG 10. You will get subsequent discount. ठीक है. So from the next Tuesday onwards, I will be bringing daily editorial analysis with Devashish sir.
and Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Your 6 days, six days. Daily news, daily editorial analysis, and DNA will be there. ठीक है, that the way we will cover. And Devashish sir and me will come on alternative day 6 PM. So please be there. And ताकू आमे prelims point रे connect करिवा, तापरे static point रे connect करिवा. ठीक है, कहीं already you have seen my classes that how I have connected everything. मैंने static और prelims को मु connect करे सब word. ठीक है, प्लस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू रे कौन लिखि पारे, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू रे कौन लिखा जीवो व्हेन यू राइट. कहीं विदाउट मेन्स आई मीन तुम जब प्रिलिम्स भी क्वालिफाई कर दो मेन्स तो हबन. आई मीन मेन्स यू नीड सम पॉइंट्स राइट. सेति पई कहूची. सो बी देयर एट शार्प टाइम, शार्प केते बेले 6 o'clock 6 PM. ठीक है, 6 PM रे. ओके, तापरे आ गोटे कथा लागी नाउ within that मु किछि जिनस करिब जंती यूपीएससी PYQ हेगला या OPSC PYQ हेला. आई विल ट्राई टू कनेक्ट है ना, जहाँ जहाँ न्यूज रे अछि तार हम स्टैटिक पार्ट करिया. जेमती आज गोटे जिनस अछि एटा देखो, आज हेला रेस्पोंसिबल नेशन इंडेक्स तो अछि, तापर गोटे अछि दिस वन माधव गडगिल पास्ट हेबे राइट. माधव गडगिल पास्ट हेबे. So it was a news on January 8 रे news थला माधव गडगिल. So what will happen, we will see what was the environmental से जहाँ report देछंती, what was the report published by him during 2010 right. 2010 से report देथले, से कहाँ पर report environment report देथले, कहाँ पर देथले, वेस्टर्न घाट्स ऊपर देथले ना, हिमालयस ऊपर देथले ना, सुंडालैंड ऊपर देथले, कहाँ पर देथले. So we will study today. Okay, तापरे आ गोटे कथा लगी. यस, तापरे हाई सीज ट्रीटी वाज इन न्यूज रिसेंटली है ना. हाई सीज ट्रीटी वाज न्यूज. तापरे इंडियाज राइस एक्सपोर्ट सर्च एटा भी देखि देबा. ठीक अछि, आर PYQ भी देखि देबा, PYQ केमति होउची. तापरे एथले PYQ या है ना. टुडे सम बिट ऑफ स्टैटिक पार्ट भी हम टे करबा राइट. Anyways, so I will move on to the first part. Okay, anyways, okay, देखो, India launches responsible nations index at to rank countries beyond GDP. ठीक अछि, गोटे प्रॉब्लम है कि India is getting ranked. माने गोटे जिनस है कि जेतले आजिका डेट रे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेगला, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हेगला, तापरे बहुत सारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हेगला, बहुत सारे इंडेक्स ना माने USA रिलेटेड हुए, USA यूरोपियन यूनियन रिलेटेड हुए, UN रिलेटेड हुए, एमाने सब पब्लिश करंती. सो दे व्हाट दे डू, गुड मॉर्निंग कानू ना, दे व्हाट दे डू सेपटे माराथन, एक्चुअली मैराथन चलछि सेपटे है ना. केडी सर भी नोचंदी. ओके, एनीवेज everybody got late today right. Some system issue was there right. Anyways, so एबे कोन बहुत सारे इंडेक्स अछि, जो इंडेक्स अछि बाहर पब्लिश करा जाय. यूरोपियन यूनियन हेगला, प्लस फिर USA हेगला, से माने कोन कोन से माने रैंकिंग दियंते समस्त को राइट. बट इंडिया केबे भी गोटे इंडिया रे निजर इंडेक्स केबे आसीनी. आम पाखरे मनी रिसोर्सेस सब अछि, स्टिल वी डोंट पब्लिश सच कोन रिपोर्ट्स. एबे फर्स्ट टाइम कोन हला, इंडिया लॉन्चेस रेस्पोंसिबल नेशंस इंडेक्स. एटा हला फर्स्ट टाइम इंडिया लॉन्च बियॉन्ड जीडीपी एंड पावर. कहीं सब बड़े जीडीपी मेजर्स करूथले, बट एक्चुअली केबे भी गवर्नेंस को नहीं करी जीडी माने गवर्नेंस हेगला, रेस्पोंसिबिलिटी हेला टुवर्ड्स द सिटीजन्स, तमरे एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज हेगला, ताको नहीं करी केबे भी कोन होतला, ताको नहीं करी केबे कोन पब्लिक रिपोर्ट पब्लिश ही होनतला. बुझी पारछ, रिपोर्ट के पब्लिश होनतला. फर्स्ट टाइम इंडिया है ना, इंडिया एज एन एंकर्ड रोल publish such report na. India's first globally anchored index. This is very important as per the prelims है ना, prelims. and आकु हमें mains point रे भी connect करि परिबा. mains point रे India's rising stature बुझी पारछ. तापरे it is developed by the World Intellectual Foundation
in collaboration with JNU तापरे आउट जगह आउट भी अच्छे IIM मुंबई भी अच्छे ला IIM हाँ IIM मुंबई तो काली के जदि क्वेश्चन पचारि दबो काली के जदि क्वेश्चन पचारि दबो responsible nations index responsible nation index के पब्लिश करूची that is published by World Intellectual Foundation एटा भी इंडियन फाउंडेशन रो ठीक है एटा भी इंडियन रिलेटेड तापरे JNU तापरे IIM मुंबई यू हैव टू कौन कहबे तुमको एटा मन रखिया बार अछि है ना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन प्लस IIM तापरे आउट कोन एथर से माने 154 कंट्रीज को ट्रैक करछन हैला इट्स बिल्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल सोर्स डेटा टू एंश्योर क्रेडिबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी ठीक अछि सो आमे एथर कोन कहू ट्रांसपेरेंसी रखुछु आ भितरे ऑब्वियसली देखो किछि देश ना किछि देश रे ट्रांसपेरेंसी न थाए आ किछि देश रे कोन थाए कि ट्रांसपेरेंसी अछि जेमति सिंगापुर इज हाईली ट्रांसपेरेंट कंट्री ली क्यून ह्यून असला परे आफ्टर द 60s 70s असला परे सिंगापुर हैज ट्रांसफॉर्मड अ लॉट नले सिंगापुर सेतल सोमालिया थिला है ना तापरे it is designed to access countries on the basis of responsible governance देखो एटा responsible governance social well-being environmental stewardship and global responsibility moving beyond conventional power and GDP based measure it is moving beyond conventional power and GDP based so एठी कोन अछि how the government is responsible towards the people how they take care of the social well-being of the people how they perform in the environmental index माने is the government serious about the environment so is the government serious about carbon dioxide per capita emission kete hoche is the government serious about the solar health of the country is the government serious about the renewable health of the country तापर आ गोटे कथा हले कि आउ द responsible governance is the government doing corruption is the government ignoring the complaints of the public सेटा सब कोन ए इंडेक्स से कैलकुलेट हुए इट इज बियॉन्ड द मेजर ऑफ जीडीपी बुझी परछो तापर इट इज कोन एट कोन लिखा है इट इज स्ट्रक्चर्ड राइट गोटे मिनिट है ना तो आ गोटे प्रीलिम्स पॉइंटर हला किछ नै तुम पढो माने दोज हु वॉच द हाइलाइट्स it's a very important issue it is structured around 3 core dimensions namely internal responsibility है ना internal responsibility it focuses on the dignity justice and the well-being of the citizens it is focused on the dignity justice and well-being of the citizens internal responsibility माने कोन अछि तमरो you are responsible towards your citizens माने एमिति नो कि maximum happiness to the greatest happiness to the greatest number सेडा नो जोड़ा कि यूटिलिटेरियन ट्रेडिशंस था एटी कोन कहा जाय कि you are taking care of your citizens or not first of all you are taking care of citizens or not ठीक है तापर हला कि माने are you concerned about the well being of the citizens से जिनसरा तुमे जस्टिस केते देलो तमरो जुडिशियरी केते परफॉर्म करूची से हिसाब रे तुमको फंडिंग तुमको जुडिशियरी फंडिंग भी दिया पड़ियो बुझी परछो तापर आ गोटे कथा लागी तापर एनवायरमेंटल रेस्पोंसिबिलिटी इट इज कवरिंग स्टीवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड क्लाइमेट एक्शन मो कोनी क्लाइमेट एक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा केते होचे आर बी कोन कहूचे आर बी एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड नो ऑब्वियसली यस एंड नो भी हे परे है ना जेंते भूटान कोन भूटान इज कार्बन नेगेटिव कंट्री भूटान इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री काहे कि भूटान जेते भी कार्बन एमिशन माने से तो कार्बन तो एमिशन करूची किंतु अन्य मानकर भी कार्बन को सिंक कर दिए निजर कार्बन को सिंक करूची अन्य मानकर कार्बन को सिंक करूची बुझी परछो सो भूटान आई कैन से दिस इज कोन तो देयर क्लाइमेट एक्शन इज वेरी वेल परफॉर्म्ड है ना एनवायरमेंटल दे हैव अ गुड एनवायरमेंटल रेस्पोंसिबिलिटी आमे कोन करछु आमे वी आर कनेक्टेड टू द रिन्यूएबल हेल्थ कोन अछि सो वी आर ट्राइंग 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 ये शांति एक्ट अछि राइट so we are focused on that also तापर external responsibility कोन अछि it is a measure a country's contribution to peace cooperation and global stability how we are contributing to the global stability माने how मतलब हमरो UN peacekeeping force रे आमे केते contribute करूछु तापरे how we are seen as कोन facilitator between Ukraine and Gaza Ukraine and Russia है ना हमरो रोल केमिति रहउछि गाजा भितरे
ठीक अच्छे आम पॉइंट ऑफ व्यू आम पॉइंट ऑफ एक्शन केमी चलची ए सब जिंस तो दीस आर द थ्री थिंग्स इट इज स्ट्रक्चर्ड ऑन थ्री कोर डायमेंशन है गोटे इंटरनल गोटे एनवायरमेंटल आउ एक्सटर्नल रिस्पांसिबिलिटी एटा केमती मन रखिबो आईडब्ल्यू है ना आईडब्ल्यू internal environment and external responsibility these are the core these are the core dimensions with respect to the responsible nations index so eta एथर पढ़िबार संभावना अच्छी so please don't miss all these things right please एटा पढ़ी की जीव एथर right and एटा कोन कि तुम मेंस आंसर राइटिंग रे तुम लिखिबो सपोज गवर्नेंस ऊपर जदी किसी क्वेश्चंस आछी इंडिया कोन करूची एंड इंडिया रा रोल कोन अछि माने towards the global governance तो ए सब रिपोर्ट्स भी तुम्हें लिखि पारिबो राइट तापर ओके इंडिया रैंक केते अछि इंडिया रैंक 16th among 154 countries ahead of US and China in responsible nation ranking so we are ahead of US we are ahead of US we are ahead of China in responsible towards the people we are ahead ठीक अछि इंडिया रैंक्स 16 so 16 is very important एटा तुम्हें मन रखिया को पड़िबो 116th so this can be asked in PEO CGL and obviously OPSC रे ASO रे भी पछारी पारे कोडी ना कोडी रे पछारा जीवो इंडिया रैंक केते अछि राइट तापर what are the top 5 countries गोटेला सिंगापुर स्विट्जरलैंड डेनमार्क साइप्रस एंड स्वीडन ठीक अछि सिंगापुर सब बेले टॉप रे थाए सब बेले आई मीन से माने इंडेक्स सब इंडेक्स रे मैक्सिमम से टॉप 5 रे थान टॉप 5 एबे सिंगापुर स्विट्जरलैंड तमे एटलीस्ट एती मन रखो सिंगापुर इज द टॉपर and India ranks 16 overall. India is the top ranked Asian nation. ठीक है तापर India ranks 16th globally ahead of South Korea, Thailand and Kyrgyzstan. So India's rank is 16 है ना and Singapore rank is 1 right तापर 9 of the top 10 countries are European understanding European strength in institutional ethics. So एठी ethical institution ऊपर बहुत फोकस करा जाउछि right European Union we know यूरोपियन यूनियन रे कोन दे हैव आई मीन दे आर बियॉन्ड कोन सेमन समस्त कॉलोनाइज करतेले दे हैव एवरीथिंग राइट ताको पाखरे मनी अछि पावर अछि आई मीन तांकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भलो अछि तो ऑब्वियसली रेस्पोंसिबिलिटी एंड एथिक्स रे से माने ऑब्वियसली भलो ही रहबे एंड गुड थिंग इज दैट सिंगापुर है ना सिंगापुर गोटे टाइम तांको खाय पर नथला किंतु एबे दे आर द टॉपर ऑफ इन मेनी इंडेक्सेस it is significant introduces a normative shift in global governance metrics prioritizing ethics over dominance so ethics over dominance this is the report it publishes tapare kono mane it prioritizes tapare complements global agenda such as sustainable development goals climate responsibility and inclusive governance so it also focuses on SDG climate responsibility jemti kohili and inclusive governance है ना how people I mean how people are attached to the governance model है ना कहीं खाली वोट कर देले तमे attached रहूनी just because I mean you are a citizen of country तमे button press कर देले that doesn't mean that you are attached to this inclusive governance no तमे आउरी सारा काम अछि कोडी पोर्टल से गला ताकू स्कैन करी पठे देलो ऐप रे that's also a kind of governance you are involved in that governance आगुर कोन स्विट्जरलैंड रे कोन था डायरेक्ट डेमोक्रेसी थिला हमर जेहेतु पॉपुलेशन बेसी होचे वी कांट एटलीस्ट वी कैन पार्टिसिपेट थ्रू वाया द एप्स एंड ऑल दैट बुझी परछ तपर आउटे कोन करले आउटे जिंस अछि जोडा मु कहबक चाहूची ए जो रेस्पोंसिबल गवर्नेंस इंडेक्स एडा एक्चुअली हेतिला देखो आर आउटे चैप्टर अछिला एन एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन टाइटल फोरम फ्रॉम ह्यूमन वेलबीइंग टू ग्लोबल स्टीवर्डशिप है ना एडा प्लीज रिमेंबर दिस आप डिस्कशन कौन है ह्यूमन वेलबीइंग टू ग्लोबल स्टीवर्डशिप रीथिंकिंग responsibility prosperity and peace in the 21st century was also held as a part of the program the session was shared by NK Singh है ना तो from human well-being to global stewardship एटा किए सेशन माने एटा किए चेयर करते NK Singh he was the chairman of the 15th finance commission and who is the chairman of the 16th finance commission if you know just write ना who is the chairman of the 16th finance commission can you tell me then it's good tapare addressing the gathering Sudhanshu Mittal founder and secretary of the World Health Foundation said that RNI represents the shift from power centric metrics to responsibility centric so power centric metric to responsibility centric metric ए जिनसटा अछि सब बेले पावर नेले हबने but at the same time you have to show that how much you are responsible to the people to the institutions
to the governance ei jinsa ko aligning governance outcomes with ethical and human values. The event concluded with the release of the responsible national index, making the start of broader global dialogue. Se jo event re eta kon heitala discussion kon heitala from human well-being to global stewardship. तार चेयरमैन थे एनके सिंह तापरे आ गोटे कथा लागी इट हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू 7 डायमेंशंस 15 एस्पेक्ट्स एंड 58 इंडिकेटर्स तापरे आ गोटे जिंस लागी तीनटा कोर डायमेंशंस कोन अछि आई डबल ई है ना आई डबल ई मन रखिबो इंटरनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई डबल ई ठीक अछि ओके ठीक अछि this is the question I have framed it. Try to answer the question. If anybody देखो those who will be watching the highlights ना pause मारिकी ए question को तमे कौन करिवो attempt करिया चेष्टा करिवो pause मारिकी ए question attempt करिवो those who will be watching the highlights in the night कहीं बहुत जन देखंती night रे भी देखंती माने सोइला पूर्व. So let me ask the question. With reference to the responsible nations index, consider the following statements. The responsible nation index is prepared only perception based survey conducted among global citizens. It कौन लिखा है जी perception based surveys conducted among global citizens. The index uses a set of quantitative indicators to evaluate responsibility across multiple dimensions. External responsibility in the index includes a nation's contribution to peace, cooperation and global stability. In the first edition of the index, India ranked ahead of both the US and China. Right? US and China. एमता क्वेश्चन अकाली पचारि भी पारे बुझी परछ एटा यूपीएससी रे तो पचारिबो किंतु ओपीएससी रे भी पचार संभावना अछि रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ऊपर फर्स्ट कहीं एटा फर्स्ट टाइम हमर हेछि ना दिस इज द फर्स्ट रिपोर्ट तो फर्स्ट रिपोर्ट को टिके सीरियसली नबा को पड़िबो राइट फर्स्ट रिपोर्ट right कौन लगा थी the responsible nation index is prepared using only perception based surveys right जो देखियो तो पॉज मार के अटेम्प्ट करियो होला it is prepared using only perception based surveys conducted among global citizens no कहीं की indicators अछि indicator 58 indicators अछि हला 58 इंडिकेटर perception based survey कोन global happiness index सेटा सब perception था बुझी पारो global happiness index is perception based ता भीतर कौन कहते गाजा इज मोर हैप्पियर देन इंडिया माने सेठी लिखा जाउछ पाकिस्तान इज मोर हैप्पियर देन इंडिया सेमती सेठी रिपोर्ट बाहरुछ एंड ऑब्वियसली दैट इज नॉट एट ऑल काउंटेबल माने माने लॉजिकलेस रिपोर्ट था सेटा कोन परसेप्शन बेस्ड कहंती किंतु रेस्पॉन्सिबल नेशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ओनली परसेप्शन बेस्ड सर्वे ओनली नो आर थ्री कोर इंडिकेटर्स होची आई डबल ई है ना 58 इंडिकेटर्स होची सो दिस इज रॉन्ग है ना The index uses a set of quantitative indicators to evaluate responsibility across multiple dimensions. Yes, 58 indicators use hoch. IEE re 58 indicators hoch. So this is correct. Tapare external responsibility in the index includes a nation's contribution to peace, cooperation and global stability. External responsibility, obviously external responsibility how much you are contributing to the global peace via UN peacekeeping forces. Via meeting the heads of the other states, via contributing to the peace formation जेमती ट्रम्प गोटा लगे देछि बोर्ड ऑफ पीस है ना आई नो सेटा यूएन रे मान्यता तो नाही बट लगे देछि गोटा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लगे देछि बोर्ड ऑफ पीस तापर हाउ मच वी आर कंट्रीब्यूटिंग द हाई सीस है ना हाई सीस रे हम कंट्रीब्यूशन कोन पायरेसी संगे हम केते लडुछु है ना जेमती हमर कोन कि सागर initiative theta amo initiative we are guarding the oceans we are guarding the Indian oceans we are guarding the Arabian Sea so amo index re we are faring well ame cooperation भी करछु like हमरो naval exercise था है ना with UK with France with UAE समस्त संगे हम naval exercise करछु तापरे global stability हमर contribution कोन this is also correct. In the first edition of the India ranked ahead of both the United States and China. Yes, this is correct. Kaiki? This one ahead of US and China in responsibility. एमने अंको ranking होजी 50s पर है. एमने कियोड़ 60 China बोले 66 रची ना कौन. Right?
ओके आउ इंडिया रो ओवरऑल स्कोर केते 0.5515 0.5515 जदि मन रखी पारिबो तो रखी पारिबो देन गुड एंड लास्ट रैंकर किए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0.35 ठीक अछि 154 सो रैंकिंग was based on 154 countries Singapore topper India 16 and India is well placed ahead than USA and China ठीक अछि okay okay So this is the renowned phase we are talking about. है ना? Madhav Gadgil ji passes away at the age of 82. Gadgil was known for his work on the ecological significance of the Western Ghats. Ecological significance of the Western Ghats. देखो renewable ecologist किए माधव गडगिल he was in news ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ବହୁତ ଲୋକ skip କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଏଟା skip କରିଛନ୍ତି and it can ask in the question Madhav Gadgil ji committee कौन थिला Madhav Gadgil committee give report on which of the माने कौन which of the घाट्स कोई परिबो या कोई परि काहा को देला वेस्टर्न घाट्स ऊपर रिपोर्ट देतला ईस्टर्न घाट्स ऊपर रिपोर्ट देतला हिमालय ऊपर रिपोर्ट देतला या हमर नॉर्थ ईस्ट ऊपर रिपोर्ट देतला इट कैन आस्क लाइक अ क्वेश्चंस है ना राइट हम PYQ देखि दबा Gadgil report and Kasturi Rangan committee report sometimes seen in the news are related to constitutional reforms, Ganga action plan, linking of reports with protection of Western Ghats. एटा गोटे क्वेश्चन थिला तापरे आउ गोटे क्वेश्चन थिला कोन एटा सब PYQ उडा बुझि पारछो सेटा IS क्वेश्चन थिला OS OPSC क्वेश्चन माने UPSC in which of the following regions of India you most likely to come across the Great Indian Hornbill and its natural habitat बुझि पारछो now they are asking about the कोन species and habitat एमता क्वेश्चन भी आसी पारुची तापरे PYQ है ना which of the following hills are found where the eastern ghats and the western ghats meet एटा 2008 रे पचारतला 2008 रे एमता क्वेश्चन पचारचंदी कोन hills are found where the eastern ghats and the western ghats meet तापरे एटा almost 20 years back रे क्वेश्चन आस्तला कोन which of the following statement is not correct western ghats are relatively higher higher in their northern region the Anaimodi is the highest peak in the Western Ghats. Tapi River lies to the south of Satpura. Narmada and Tapi River valleys are said to be old rift valleys. In the question pocharuchi, right? They are asking such questions. Which of the following statement is not? Mane, देखो Western Ghats. So I am showing you the PYQ. 20 वर्ष तोला इम्तिया question पढ़तला. 17 वर्ष तोला इम्तिया question पचारतला. तापरे आउट question देखो. Species को नेकरी. Consider the following statement 2008 saltwater crocodile is found in the Andamans. Shrew and tapir are found in the western ghats of the Malabar region. Such questions are asked like this. Right. So let me go to the western ghat region. कौन दीची टिके वेस्टर्न घाट्स ऊपर टिके मु चर्चा करते भी एक्चुअली कौन है वेस्टर्न घाट्स है साइड रेंज है ना तो एथर वेस्टर्न घाट्स ऊपर क्वेश्चन आसी पारिबो बिकॉज द ग्रेट मैन कौन ही पास्ड अवे राइट तो माधव गडगिल जी पास्ड अवे से एक्चुअली महाराष्ट्र लोको so he was an ecological scientist and his contribution is immense and so we respect him for that right तो वेस्टर्न घाट्स कौन सह्याद्री रेंज को कहते महाराष्ट्र को कहते सह्याद्री रेंज ओके एटा मन रखता तो दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस माउंटेन चेन पैरेलल टू इंडियन वेस्टर्न कोस्ट बुझी पार तो हियर you will find the western ghats ठीक अछि तापरे the range extends from Gujarat to Kerala covering about 1600 km so Gujarat to Kerala है ना they passes through 6 states माने बुझी पा 6 टा स्टेट अछि गुजरात अछि महाराष्ट्र अछि गोवा अछि कर्नाटक अछि तमिलनाडु एंड केरला एटा क्वेश्चन पचरा जाय छै how many states it passes so it is passed by 6 states Gujarat Maharashtra Goa Karnataka Tamil Nadu and Kerala तापरे geologically the western ghats are older than Himalayas obviously Himalayas के पे 1 crore years तळे formation ହେଇଛି western ghats is way more older एटा अछि the western slopes are steep while the eastern slope descends gradually into the Deccan plateau है ना it is एटा भी माने पचारि पारे the eastern slopes descends gradually into the Deccan plateau
है ना द वेस्टर्न स्लोप्स आर स्टीप टिके हाइट थाए तापरे एवरेज एलिवेशन इज 900 रु 1600 मीटर विथ अनाइमोडी इज 2695 मीटर एज द हाईएस्ट पीक तो एति कहि परिबे अनाइमोडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ रे वेस्टर्न घाट्स रो हाइट टिके बेसी थाए साउथ रे वेस्टर्न घाट रो हाइट टिके बेसी थाए बुझी पातो हया एंड नॉर्थ रे कम थाए सेति पे स्टीप लिखाइ छै तापरे इट पासेस इंक्लूड पालघाट थालघाट एंड भोरघाट देखो आकु भी कहि परिबे नॉर्थ रु साउथ अरेंज करिया पे कहि परिबे बुझी पार नॉर्थ रु साउथ एटा सब टेस्ट सीरीज रे पकेबे ए सब क्वेश्चन सोडा नॉर्थ रु साउथ रु अरेंज करिबा को पके परिबो पालघाट थालघाट एंड भोरघाट they act as a barrier to southwest monsoon winds causing orographic rainfall and rain shadow effect बुझी पारछो they act as a barrier to southwest monsoon winds and causing orographic rainfall and rain shadow effect बुझी पार orographic rainfall बुझी पार हिट करिवो ना बुझी पारछो सेपटे एपटे कोन orographic हे जिवो माने एपटे रेन हबो सेपटे रेन शैडो रीजन हे जिवो तब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2012 the western ghats are a biodiversity hotspot and the source of 40 to 45 rivers बुझी पारछो क्वेश्चंस एमती भी पचारि परिबो वेस्टर्न घाट रो को रिवर्स ओरिजिनेट करछि को रिवर्स सोर्स थाए बुझी पार देखो आको कोंती आ गुटे जिंस हला कि आ गुटे जिंस ओपीएससी रे गुटे कोन कहि परिबे आई मीन सेम फैक्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ताको किए कॉइन करिछि है ना हु कॉइन्ड द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड व्हिच फाउंडेशन इज रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेनिंग हॉटस्पॉट रीजन इन द वर्ल्ड गोटे हला कि गोटे यू कैन सीआई हला तमे कहबो तम भाबियो सीआई टा कोन तापरे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ताको कॉइन की करिछि नॉर्मन मायर्स हला प्लीज एडा टिके मन रखिबो काहे कि क्वेश्चंस पचार छ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के कॉइन करछे इट इज नॉर्मन मायर्स ठीक अछि तापरे हॉटस्पॉट रीजन के कंजर्वेशन इंटरनेशनल दे डिसाइड व्हिच आर द हॉटस्पॉट रीजन्स तो वेस्टर्न घाट्स आर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड सोर्स ऑफ 40 to 45 रिवर्स आ गोटे कथा कहूँ आर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कौन अच्छी इट वाज डिक्लेयर्ड एट वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ताको वर्ल्ड हेरिटेज साइट केबे करछि 2012 रे करछि काहे कि इट हैज हॉटस्पॉट्स एंड मेनी एंडेमिक स्पीसीज आ गोटे कथा जदि हॉटस्पॉट रीजन रे डिक्लेयर करिवो ना सेठी एंडेमिक स्पीसीज रहिबा कथा अराउंड 1500 वास्कुलर प्लांट्स एंड 70% ऑफ कोन 70% population of कौन कौन था 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज है ना ओरिजिनल स्पीशीज सेट रहबा कथा मतलब 30% एक्सटेंड हे जिबा कथा एडा वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेयरिंग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ठीक अछि तापर वेजिटेशन टाइप्स कोन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन हाई रेनफॉल जोन्स है ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तापर सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इन द ट्रांजिशनल एरियाज एंड आउट लगे शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स अबव 1600 हाइट है ना these are the kind of vegetation type tropical evergreen they are semi evergreen and shola grasslands है ना please remember I mean this grassland is very important shola grassland ऊपर क्वेश्चन पचारंती राइट shola grassland ऊपर क्वेश्चन पचारंती ओके तो जदि ईस्टर्न घाट ऊपर क्वेश्चन एमिति आसपार है ब्राह्मणी नागवली सुवर्णरेखा वंशधारा ठीक है which of the following rise from the eastern ghat तो क्वेश्चन तो एमिति भी आसपार है which of the following rise from the western ghat क्वेश्चन कैन एक्ट लाइक दिस तापर एटा मु देछि बहुत सारा रिवर देछि which can be the source of western ghats है ना बहुत सारा सोर्स अछि which originate from the western ghats ठीक अछि western ghats river in कर्नाटक कोन माने बहुत रिवर्स दे देबो सीधा से पचारिबे कोन हो कि which of the following rivers originate from the western ghats ठीक अछि कृष्णा बेसिन कृष्णा घटप्रभा मलप्रभा भीमा तुंगभद्रा कावेरी बेसिन हेमावती काबिनी हारंगी लक्ष्मण तीर्थ इज वेरी इंपोर्टेंट है ना तापरे लोगा बावनी सुवर्णवती अर्कावती गोदावरी बेसिन कोन अछि एटा तो मन रखिया पड़िबो दीस आर द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स तापरे आ गुटे कोन अछि केरला रे कोन अछि माहे कोरापुजा चालियार रिवर कोन हेतला बेपुर रे एडी कोन हेतला 2 वर्ष तळे कोन हेतला वर्ष तळे हेतला कोन चालियार रिवर रे द डिजास्टर हैपेंड वायनाड रे लैंडस्लाइड हेतला तापरे भरत पूजा रिवर इज वेरी इंपोर्टेंट नीला रिवर कोन देखो
So this is very important river. Periyar, Pamba, Chalakudi, you know this. Bhavani, Pamba, tributaries of Kaveri. You have to remember this. Tapare Western Ghats ko river achi. Eta dekho. Tapare Tamil Nadu ko river achi. Kaveri, Vagai, Tamilapani, Pachiyar, Korea, Chittar, Manimuthar. এই সব রিভার আছে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বর ঠিক আছে এটা কোন তোমরা यूपीएससी भी पचारि पारे एंड ओपीएससी भी पचारि पारे जोड़ा कि टिके नॉन रिवर्स हबो जेमती हमर हे गेला एटा चालिया रिवर टा पचारि पारे काहे कि सेठी भी लैंडस्लाइड हेइतला से तोड़ा ठीक अछि भरत पूजा भी पचारि पारे सो पीडीएफ अछि प्लीज लुक एट द लिस्ट राइट तापर आउट पीवाईक्यू केमतिला देखो एटाला आर पीवाईक्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट biodiversity hotspots are located only in the tropical region right India's four biodiversity hotspots go to eastern Himalayas, western Ghats and Andamans. Which of the following statement given is or are true? Right? Questions एमिति भी पचार 2010 रे तापरे which of the following regions of India is now regarded as ecological hotspot 96 कोडी वर्ष तळे एमते गोटे क्वेश्चन पचार थिले which one of the following regions is regarded as ecological hotspot सेतळे हितला Western Ghats सेतळे नुवा नुवा हिसला बुझी पाछो so PYQ is very important Gadgil ji passed away so this is very important आउट कथा दिछि आउट क्वेश्चन एडा भी यूपीएससी रे 2011 रे पचार थिला 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma regions hotspots which is species richness, vegetation density, endemism, ethnobotanical importance, threat perception, adaptations of flora and fauna to the warm and humid conditions. Which 3 of the following are correct criteria in this context? Right? एटा आ उपरे Western Ghats उपरे Western Ghats रो hotspot उपरे क्वेश्चन पचार थिला राइट तो आर आंसर कोन पे स्पीशीज रिचनेस तो हे परिबो एंडेमिज्म तो हे परिबो आ थ्रेट परसेप्शन हे परिबो माने 30% फ्लोरा फौना जदी माने एक्सटेंड हे जाउची देन दैट कैन बी एडेड दैट्स अ मेजर फैक्टर व्हाई दैट्स अ मेजर फैक्टर फॉर द कोन फॉर हॉटस्पॉट रीजन तापर एंडेमिक स्पीशीज केते रहउची तापर स्पीशीज रिचनेस केते रहउची एडा लोडा फैक्टर है ना आउट है कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स कोन अछि Western Ghats are recognized as one of the 36 global biodiversity hotspots. So globally, 30 out of 36, Western Ghats is amongst them. Despite covering less than 6% of India's land area, they harbor a disproportionately large share of country's flora and fauna. एडी कोन जे plants, amphibian, reptiles and fish waters अछि. तापर आउट है कि species endemic to Western Ghats है ना species endemic to Western Ghats गोटेला lion-tailed macaque please remember this है ना तापरे नीलगिरी तहार तापर नीलगिरी लांगुर मलबार civet is critically endangered है ना एडा तमटे मन रखिया पड़े मलबार civet टा आस्ट्री तापरे lion-tailed macaque टा कोड अछि I think it is found in Eravilicum National Park Nilgiri Tahar is found at the Tamil Nadu region Setikar National Park rochi tapare Malabar region rochi tapare endemic birds kon अछि Malabar grey hornbill तमको hornbill लागतो नागालैंड मणिपुर लागतो किंतु Malabar grey hornbill जदि पचार देबो काले grey hornbill है ना Malabar से कहबोनी grey hornbill जदि पचार देबो तम मारी के आसीबो जे कि एटा it is available in the northeast no it is not available in the northeast it is available in the Western Ghats कोन ग्रे हॉर्नबिल तापरे नीलगिरी शोलाकिली नीलगिरी फ्लाईकैचर व्हाइट बिल्ड ब्लू रॉबिन की एंडेमिक प्लांट कोन नीलकरंजी पर 12 इयर्स रे एडा माउस फ्लावरिंग हुए पर 12 इयर्स नीलकरंजी पूरा ब्लू ब्लू होई जबो से जगहटा नीलकरंजी जानती कोन तर स्पेसिफिक टाइम था लास्ट टाइम इट हैपेंड इन 2014 या 15 तापर एबे नेक्स्ट आसी जिवो नीलकरंजी आसीओ पर 12 इयर्स रे कोन मास फ्लावरिंग हुए से टाइम रे तो प्लीज रिमेंबर lion-tailed macaque नीलगिरी ताहर मलबार civet है ना एटलीस्ट मलबार civet तो मन रखिबो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ठीक अछि एटा यूपीएससी 2023 रे पचारतला कंसीडर द फॉलोइंग fauna lion-tailed macaque Malabar civet samba deer which how many of the following are generally nocturnal or most active after sunset
try to attend this question है ना. जी देखिए please pause and try है ना. Line tailed macaw, Malabar civet जी attend करे. Nocturnal माने कौन? What do you mean by nocturnal? Yes. Yes, nocturnal माने कौन? I mean they are most active after the sunset है ना. Most active after the sunset है ना. आप इधर क्या पर Dialton macaw, Malabar civet and Samba deer. Try to attend this question. Okay. Try to attend this question. हाँ. ये highlights देखिए ना. Do pause it and ठीक है. एटा ला लाइन टेल मक्का वाला डायर्नल स्पीशीज है. डायर्नल they are active at कौन they are always active at कौन कह morning day time and Samba deer also active at morning and day time है ना. Morning and day time. Malabar civet is a nocturnal species. They active after the sunset है ना. So only one होगा answer. ठीक है. Only one होगा answer. ठीक है. Diurnal. I hope you know the meaning of diurnal and nocturnal. ठीक है. तापर गडगिल कमिटी देखो गडगिल कमिटी and कस्तूरी रंगन कमिटी एटा क्वेश्चन आस्तला माने माने पचारि पारे गडगिल कमिटी कोन कोन देथिला राइट. गडगिल कमिटी and कस्तूरी रंगन कमिटी ऊपर क्वेश्चंस पचारि पारे जेहेतु that guy has passed away, so there can be a question asked on this. ठीक है. Okay, so Gadgil committee was formed in 2010 and it was formed in 2012, right? Gadgil committee was formed in 2010 and formed in 2012. Declared entire Western Ghats as ecological sensitive area, right? कहीं गडगिल कमिटी कौन कहता कि आई मीन सी पूरा स्ट्रिक्ट थिले पूरा वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन मार्क कर देते एंड ही प्रपोज 3 कैटेगरीज EZ1, EZ2 एंड EZ3 है ना. स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बैन ऑन से बैन भी कर देते जीएम क्रॉप्स को बैन कर देते तापरे से SEZ को मना कर देते. देयर कैन बी नो SEZ at this area. There can be no SEZ. So this is very important. पचार दबो गडगिल कमिटी रे कौन recommendation थिला. Though the man has passed away recently, though they can ask questions. तापरे strong restrictions on mining and quarrying है ना. I mean he banned mining. तापरे suggested phasing out existing mines in 5 years. EZ1 and 2 proposed Western Ghats ecological authority बुझिपारे अप्रोच इकोलॉजिकल फर्स्ट एंड दिस लैंड. तापर आउट हला कि कस्तूरी रंगन कमिटी आको रिव्यू करे पे नोट रिपोर्ट आसला. ही डिक्लेयर्ड 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. तो एटी कोन एंटायर दिस इज 37%. काली को स्टेटमेंट दे दबो गडगिल कमिटी डिक्लेयर्ड ओनली 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स, देन दैट इज रॉन्ग. ठीक अछि. ठीक अछि. तो दैट इज रॉन्ग है ना. एटी 37% कहथिला in Kasturi Rangan, but it declared entire Western Ghats. ठीक है. It declared entire Western Ghats. तापरे propose single कौन ecological sensitive classification, no graded zoning. कहीं की एडी कौन टिके balanced and diluted approach था. This committee was bit diluted कहीं की एमने टिके restrictions कम करते ले as per the Gadgil committee. तापरे no blanket ban like Gadgil along development with regulations. It is red, orange and green category करते ले. अब the red category zones भी देते ले. Focused on regulation rather than complete phase out. So it was more about regulation. It was more about stricter
स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थिला एटी खाली रेगुलेशन थिला इट फोकस्ड ऑन बैनिंग इट फोकस्ड ऑन कोन डीरेगुलेशंस तापरे फेवर्ड स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी तो एडा कोन कहबी एडा डेवलपमेंट फ्रेंडली थिला एडा स्ट्रिक्टर अप्रोच थिला राइट दिस वाज डेवलपमेंटल फ्रेंडली एंड स्ट्रक्चर बेस्ड एटी कोन थिला कम्युनिटी बेस्ड बुझी पार एडा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच थिला माने इट विल इन्वॉल्व एवरीवन फ्रॉम कौन कौन इट माने ए जो गडगिल कमिटी थिला इट विल इन्वॉल्व एवरीवन माने तमे पंचायत रे लोक अछन ताकू इन्वॉल्व करिवो एडा थिला कि बॉटम अप्रोच थिला बुझी पारछो तमे विलेजेस लोक को इन्वॉल्व करिवो माने ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करियो टॉप लोक को इन्वॉल्व करिवो बुझी पारो एडा बॉटम अप अप्रोच थिला तो गडगिल कमिटी इज वेरी इंपोर्टेंट सो कोन इट मेन जिंस वाला कि इट डिक्लेयर्ड एंटायर वेस्टर्न घाट्स एज ecological sensitive area right तो प्लीज डू ऑल दिस क्वेश्चंस है ना इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया पर एमती क्वेश्चन आछे अमरकंडम हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस माने माने मैपिंग हिसाब रे आछे अमरकंडम हिल्स आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विद्या एंड सहायद्रा बिलीगिरी रंगन हिल्स constitute the easternmost part of the Satpura region शेषाद्री हिल्स constitute the southernmost part of western Ghats एटा मु कहबिनी जी एटा पीडीएफ डाउनलोड करिवे तमे निजे यार आंसर ओडा फाइंड आउट करिवो हला तापरे बिली रंगन हिल्स इज वेरी इंपोर्टेंट इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स है ना इट मु आंसर दे देछि इफ यू वांट टू लुक है ना तापरे हिल्स एट द हिल्स रेंजेस एट द नीलगिरी रीजन में केतरा हिल्स अछि है ना तो एटा तुमको पढ़िया को पड़िवो एठू पूरा स्कैन होछि काहे कि आर गोटे ट्रिक हैला एन ए सी नीलगिरी ऊपर अछि तापर अनमलाई हिल्स ऊपर अछि तापर कार्डमम हिल्स अछि कार्डमम हिल्स रे अगस्तमलाई रीजन अगस्तमलाई हिल्स थाय सेट अगस्तमलाई हिल्स त एन ए सी माने पछारी परे अरेंज द हिल्स एज पर द नॉर्थ टू साउथ नीलगिरी अनमलाई हिल्स नीलगिरी अनमलाई कार्डमम या कार्डमम नीलगिरी अनमलाई या नीलगिरी कार्डमम अनमलाई नीलगिरी कार्डमम एमते देई परिबो राइट तापर अनमलाई हिल्स लोकेटेड साउथ ऑफ नीलगिरीज मु कोनी नीलगिरी तळे अनमलाई हिल्स अछि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स अनामुडी 2695 meter is the highest peak of western ghats तापर palani hills extension of western ghats 8 अछि in Tamil Nadu connect Nilgiri and Annamalai region important for the eastern flowing rivers Wayanad hills between Nilgiri and western ghats Wayanad hills तापर important wildlife corridor सेठी कोन सेठी बहुत सारा wildlife corridor मिले बाघ मिले सेठी तापर Biligiri Rangan hills linked between eastern ghats and western ghats इकोलॉजिकल कॉरिडोर देखो एटा मु देख दे काई कहला वेस्टर्न घाट इज वेरी इंपोर्टेंट मते लागु तर वेस्टर्न घाट्स ऊपर क्वेश्चन आसीबो माने आसीबो सो टिके देखि देबो सत्यमंगर हिल कोन एटा कोन एलिफेंट कॉरिडोर अछि मु केबे गोटे कर देबी माने मैपिंग कर देबी माने केरला आ तमिलनाडु केबे गोटे मैपिंग कर दबा राइट है ना तो ए क्वेश्चन टा करबो जे टिके पॉज मारी करी क्वेश्चन टा अटेम्प्ट करबो दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन राइट consider the following statements regarding the Gadgil committee Western Ghat Ecological Expert Panel. It emphasized a bottom-up approach by involving local community in environmental governance. It recommended that new hill stations and specific economic zones should not be permitted in ecologically sensitive zones. It suggested that only about 1/3 of the Western Ghats should be brought under the ecological sensitive area category. It proposed that genetically modified crops should be banned across the Western Ghats. तो एटा गडगिल कमिटी ऑफर है कोन स्टेटमेंट अछि यू हैव टू आंसर राइट काहे कि बिकॉज़ गडगिल कमिटी वाज इन न्यूज सो इट देयर काहे कि देखो गडगिल कमिटी ऑफर कोन क्वेश्चन पचार नाथि मु जहा क्वेश्चन पचारी मु कहि दैछि जेहेतु दैट मैन पास्ड अवे तो तांको रिपोर्ट को नेकी से माने क्वेश्चन पचारी परंती बुझि पाटा 2 3 4 ओके 2 3 4 हम क्वेश्चन देख सलन तुमे that was too fast Vivek okay केमती वो देखिया okay let me see Gadkil कोथला it recommended new hill station and special economic zone should not be permitted in ecological sensitive areas yes it like I should not then that is right it suggests that only about 1/3 of the Western Ghats no एडा हला कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट एटा कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट 1/3 तो नुह it proposed that genetically modified crops should be banned across yes this is correct
माने एटी कोन स्ट्रिक्टर रेगुलेशन थिला कारो गडगिल रो इट एम्फसाइज अ बॉटम अप अप्रोच इट इन्वॉल्व एवरीवन माने कोन फ्रॉम विलेजेस टू द ऑफिसर्स इन्वॉल्व एवरीवन बुझी पाछो एटी लिखा हितला ना लेट मी erase you once देखो गडगिलटा इज बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थिला बुझी पाछो एट लिखा है बैन ऑन जीएम क्रॉप्स नो एसईजेड्स तापर रेस्ट्रिक्शंस ऑन माइनिंग एंड क्वारिंग बुझी पाछो तापर प्रपोज वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी एटी कोन थिला कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच थिला एटी देखो एटा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच माने बॉटम अप अप्रोच थिला बॉटम अप अप्रोच है ना कस्तूरी रंगन कहितला ही 1/3 वाला सीन टा ना कस्तूरी रंगन 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया एटा मु सेपडा लगे देतली सेते पई भूल हेगला बुझी पारछो सो प्लीज एटा तो ए रिपोर्ट टी पढ़ी की जीवो एटी कोन डेवलपमेंटल फ्रेंडली थिला हां तो माइनिंग फाइनिंग करि परिबो विथ सम रेस्ट्रिक्शंस काहेकि रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन क्रिएट करबा को एट कहउथिला है ना एटी ब्लैंकेट बैन नथिला लाइक गडकिल आ एठी कोन थिला जीएम एडाला मेन जिंस जीएम क्रॉप्स को बैन कर देचंदी काली को लिखिबो जीएम क्रॉप्स वाज परमिटेड सब ह मारी के आसीबे नाही इट वाज नॉट परमिटेड ठीक अछि एटा एटा सब कोन आछो एटा आइदर पिला भूल करिवे 2.67 मार्क्स माइनस हबो या तम पाइबो 2 मार्क्स एमदा क्वेश्चन रे सब कोन होय छ तमरा प्रीलिम्स डिसाइड हे जाय काहे इजी क्वेश्चन मोर ओवर लेस पिला करिवे किंतु एमदा क्वेश्चन ही छाडंते राइट तो अमरकंटक हिल्स कोड अछि एट अछि एटा साइड रे नो एटा सतपुरा हबो ठीक अछि अमरकंटक हिल्स बिलिग्राम हिल्स constitute the eastern part of the Satpura range. This is also wrong here. It is a link between Western Ghats and Eastern Ghats. Is a link. Seychalam Hills constitute the southernmost part of the Western Ghats. No, it is a part of Eastern Ghats. Seychalam is a part of Eastern Ghats. So previous year question the answer option कौन then? नहीं एडा no एडा previous year question हो एडा मु बनेछि एडा मते लागु जे कि question आसी पारिबो एथरो गडगिल रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टा मु कहिनी तमे इफ यू वांट यू कैन डिस्कस प्रीवियस पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू ठीक देखि देबो एडा तो हेगला ए क्वेश्चन तो हेगला तो एडा तो मु डिस्कस कर दे छबे है ना आ भीतर मलाबार सिवेट इज द ओनली कोन नॉक्टर्नल स्पीसीज बाकी सब डे टाइम रे एक्टिव रहंती है ना काहे आंकु भी खाए दरकार फल दरकार संबर डियर को भी फल दैट क्वेश्चन आंसर टा कोडा गला कस्तूरी रंगन वाला माने गडगिल वाला तो गडगिल वाला कहूछ मुझे सब रफ कर दउछे ताकि इट विल बी वेरी हां एडा कहि दउछ ओके ओके भाई एडा ही इंपोर्टेंट एटा ही पछारिबा को एडा तुम यूपीएससी रे भी पछारिबो एडा तुम ओपीएससी रे भी पछारिबो थरो देखो एडा टिके देखि दियो ना कोन हे जे गडकिल कोइची डिक्लेयर एंटायर वेस्टर्न घाट्स देखो गडकिल कमिटी वाइज इन द न्यूज़ जानिचो बिकॉज दैट मैन पास्ड अवे राइट एडा मु तुम ऑलरेडी कहछि सो ही इज वेरी इंपोर्टेंट एज पर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ही इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि डिक्लेयर एंटायर वेस्टर्न घाट्स एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया तो माने स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस तापरे प्रपोज 3 सेंसिटिव जोन्स 1 2 3 एडा मन रखिबो सेंसिटिव जोन्स स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल गाइडेंस माने बैन ऑन जीएम क्रॉप्स इज स्ट्रिक्टली बैन नो एसईजेड्स तापरे माइनिंग ऊपर रेस्ट्रिक्शंस तापरे फेज आउट एक्सेस माने जो माइन्स उडा थिला ताको फेज आउट करया पई से 5 इयर्स लगेथिला माने 5 इयर्स पई टाइम दिथिला फेज आउट करिवो धीरे धीरे या तापरे प्रपोज वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल अथॉरिटी वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी इज प्रपोज्ड बाय गडगिल साहब नॉट बाय कस्तूरी रंगन कोन टिके डेवलपमेंट फ्रेंडली थिले तापरे अप्रोच कोन इकोलॉजिकल फर्स्ट या कम्युनिटी बेस्ड आको कोन बॉटम अप अप्रोच काहे वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व द लोकल विलेजेस एंड द नेटिव लोकन को ठीक अछि एटा हला कि गडकिल कमिटी ठीक अछि एबे क्वेश्चन ना देखो it emphasizes a bottom up approach mukoni community based approach by involving local communities in environmental governance so this is correct it recommended new hill stations and special economic zones should not be permitted in ecologically sensitive it lekha ji kono should not be permitted then this is also correct
suggested that only about 1/3 of Western Ghats. Okay, मैं देखी दूँ ठीक अच्छे जदि ना then it's better ना आम जानी जावा actually कौन it suggested that only about 1/3 of the Western Ghats should be brought under the ecologically sensitive area. This is wrong. एडा की करला एडा कोइतला कस्तूरी रंगन कोइतला. It proposed that genetically modified crops should be banned across the Western Ghats. But it should be banned. So this is correct. Our answer कौन होगा था 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. So एडा वो ठीक अच्छे एडा 1, 3 and 4 एडा एडा गलत गलत तो ओपीसी कौन करियो उसको नॉट वैलिड कर दबो. यस ओपीसी कौन करियो उसको नॉट वैलिड कर देले गला किंतु हाँ आई होप एडा बोधे टाइपिंग एरर रही है एडा हम एडा 2 एडा 3 हो हला 1, 3, 4. आई होप द क्वेश्चन वाज गुड है ना मते मते लागु चित्र पचारि पारे बुझी परछो पचारि पारे ए क्वेश्चन टा मो सेंस जहां मते कहूची इट दे माइट गो फॉर दिस क्वेश्चन. बुझी परछो जे ओएस में ओसीएस में सीरियस अछंती ना दे हैव टू टिके तांको आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करिया पड़िबो बुझी परछो तो मु टिके एक्सपर्ट माने थिंकिंग मु टेस्ट सीरीज रे क्वेश्चंस रा देखियो माने आ पर भी फ्रेम कर देबी केबे गोटे मैपिंग करला बेलको हमें वी विल डू एन थरो मैपिंग करिया बुझी परछो एटी बहुत सारा माने नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज अछि बुझी परछो एटा तो ट्राई स्टेट रो नीलगिरी हिल्स ए पार्ट ऑफ ट्राई स्टेट्स बुझी परछो किंतु पढ़ी बोला एथरो माने आसी पारे एथरो आसी पारे मते लागुची my sixth sense says that this can come in the exam बुझी परछो तो please remember lion tail macaw malabar these are the endemic species of Western Ghats so पचारि पारंती बुझी परछो तो एटा सब टिके मन रखि जीवो आर कोन अछि गलो आर माने आर आईओसिन स्टेटस टा टिके पढ़ी जीवो हला आई थिंक नीलगिरी ताहार इज कौन थिला एंडेमिक राइट माने एंडेंजर्ड स्पीशीज मलाबार सिविट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड राइट हाँ मिले मिले तुम्हें से ग्रुप रे जॉइन करनो के टेलीग्राम रे तुम्हें से जो ग्रुप रे जॉइन कर दो भला माय पीडीएफ इज अवेलेबल इन द टेलीग्राम माने से 11टा बेल को माने आकु कहले से ये कर दबो से अपलोड कर दबो डोंट वरी है ना ठीक अछि मु ऑलरेडी कहि दै छी कोन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट सब कहि दै छी 2011 प्रीलिम्स रो क्वेश्चंस भी पचारु छी बुझी पारो तो वेस्टर्न घाट्स ऊपर न्यूमरस क्वेश्चंस आसी छी सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट है ना आकु प्लीज ताकु माने डिस्कार्ड करिबोनी क्वेश्चन ता आसी पारे थर बुझी पारो एटा हला रिवर्स फ्लोइंग काहे क्वेश्चंस एमिति पचार जदि ईस्टर्न घाट ऊपर रिवर्स पचार देला माने वेस्टर्न घाट ऊपर रिवर्स पचारिबो राइट so this man is very important कहेंगे Norman Myers is very important so please remember his name Norman Myers who coined biodiversity hotspot right ठीक है we will wind up the session है ना highlights देखी दबो right I'll wind up the session we'll meet in the we will meet in the DNA ठीक है तो एनी जदि किसी डाउट फाउट सब मते पचार दबो आई विल ट्राई टू कवर अप ओके जदि किसी दरकार जदि कमेंट सेक्शन तो ओपन अछि यू कैन राइट तुम को टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिवार अछि मोगरे टाइम अछि आई विल डिस्कस है ना 3-4टा क्वेश्चन आनी के आसले वी विल हैव अ नाइस डिस्कशन अबाउट दिस ओके कानू एनीवेज ओके